Hello everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Hello everyone, hello. I can see काफी सारे लोग आ चुके हैं. Yes, we will be sharing the calls soon, guys. Just give us a minute. Shivangi ma'am is also here. Let me invite her to the stage. I'm in profit in Motherson. Should I book profit and hold? I can see काफी सारे questions आ रहे हैं. Mayuri, we have a Nifty Queen today. Apparently, due to some unforeseens, we are shifting Chandan sir's session, but we'll update you on that soon. Shivangi ma'am, I've sent you an invite to join. Please take up the stage. Yes, ma'am, you are visible. I hope you can hear me. Yes, absolutely. Thank you, Anuj. Great. You can set up, you can be ready to share your screen. Meanwhile, I'll just, go ahead with the introduction. So, good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. Welcome to another Nifty Expiry, but this is a special expiry because it's a monthly Nifty Expiry. We have our Nifty Queen with us, Ms. Shivangi Sharda. Nifty Queen is a tag जो आप लोगों ने उन्हें दिया है because of a profit streak. Last हमारे in fact 5 sessions profit में है. उससे पहले हमारे एक note rate था. What I can remember, I guess बाकी details के I need to look after the entire history of the Stockholm sessions. But let's hope कि आज भी वैसा ही दिन हो and we continue our profit streak. I can see काफी सारे messages आ रहे हैं. Hello Nifty Queen, good afternoon, good afternoon. So for the people joining in for the first time, I'll just take 30 more seconds. Every day we have 2 sessions. The morning sessions focuses more around stocks and the afternoon sessions focuses more around our derivatives, basically our expiry. So अगर हम आपके queries नहीं ले रहे हैं in the afternoon session, no need to worry. We'll try to take up everything in the morning session. And अगर आपको सिर्फ निफ्टी क्वीन से ही आंसर चाहिए तो tomorrow morning she will be available here at the same platform at 9:30 a.m. So I guess we are good to go. Feel free to drop your queries. Time रहा तो we'll take it up. नहीं तो we'll focus more on our Nifty expiry. And ma'am, over to you. Thank you so much, Anuj. और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे तो मैं देख ही रही हूँ काफी सारे क्वेश्चंस और सब लिख रहे हैं निफ्टी क्वीन. बट हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफी मैसेजेस आए. सो यस, आई होप टुडे of course the bulls are with us, so of course we'll have like a good session even today. Thank you so much, Anuj, for the introduction and coming to Stockholm and talking about the Nifty has always been so special. तो बात करते हैं निफ्टी की. हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से एक नए लाइफ टाइम हाई टच होते जा रहे हैं और 26,000 के ऊपर कितने कंफर्टेबली हम होल्ड करें. इनफैक्ट वी क्रॉस 26,100 मार्क्स एज वेल. आवर पोजिशनल टारगेट वाज 26,200 और फिर अब और शिफ्ट हो रहा है 26,350 तक. So we are expecting this move will continue. Little data points I'll just mention. Put call ratio जो है वो comfortably 1.3 के ऊपर hover कर रहा है, which clearly indicates that put writers बहुत ही अपना comfortably positions बनाए हैं market में. And we are seeing put DK भी काफी जल्दी हो रहा है आज. Of course monthly expiry है तो थोड़ी बहुत swing जरूर रहेगी. But today has been one of those days जहाँ काफी एक comfortable buying points मिले हैं पूरे दिन में. If I convert this daily chart into hourly frame as well, हम देख रहे हैं कि first half, this is where the day started. So first tick से ही हमें एक अच्छा 3 घंटे का up move मिला था, and after a little bit of consolidation we've again started the up move now. So overall buy on decline will continue. Consolidation हुआ है बीच में, that is a good sign for us because अब जो है वो move अच्छे से हमारे capture करने की पूरी possibility रहेगी. So right now, of course, we are at lifetime high levels. We are tracking 26,100 call, which is right now at 70-75. तो इसको हम थोड़ा cool off होने देंगे for us to enter because right now just हमने एक lifetime high level touch किया है. So we'll just wait for it to cool off another 15 to 20 points. हम फिर enter करने का मैं पूरे आपको levels और stop losses target सब आपको mention कर दूंगी. But overall buy on decline ही है stance. Bullish stance जो है वो continue रखना है. Now the intra hour support यानी कि आज next 1 घंटे के लिए जो support काम आएगा वो है round about 26,050 का.
So 26,050 will be our support for the next 1 hour. And for the next up move to 26,200. और positionally अगर हम बात करें तो 25,950 is the support and positionally 26,350 is our target for next week. Of course हम आज सीरीज का एक एक्सपायरी है, सीरीज का एंड है, तो अच्छे रोलओवर्स भी देखने को मिल रहे हैं, which is a positive indication कि next सीरीज भी ये कैरी करेगा. Usually September is quite challenging for Nifty and for global markets, but this month has been clearly spectacular. सारे records तोड़े हैं इसने पिछले 10 साल के और बहुत ही अच्छा हम closing की तरफ भी जा रहे हैं. Let's talk about Bank Nifty quickly, then we'll come back to Nifty. Bank Nifty एक series of underperformance के बाद अब पिछले 2 हफ्तों से मूव होना शुरू किया है और पूरा contribution heavyweight banks को जा रहा है. We are seeing काफी momentum है, so I'll just come back to the Nifty call again. 26,100 call is above 110 levels. तो अगर हमें shift करना हो, so we will shift to 26,150 as well as per the setup. We've crossed 26,150 marks, तो काफी अच्छा momentum है. Of course, we not want to miss that. What you can do is 26,150 के कॉल को आप रडार पे रख सकते हो, which is right now 75 levels. इसको हम ट्रैक करते हैं, देखते हैं, and we'll try to capture this with minor dips, right? Okay, let's come back to Bank Nifty quickly. We'll discuss the levels. यहाँ पे भी outperformance है पूरी तरह से, and the next levels that we're expecting is 55,000 here in this index with a support of 54,000 levels. तो यहाँ पे भी buy on decline करना है. Focus will be on heavyweights. The preferred pick is ICICI Bank, जो majorly drive करते हुए दिख रहा है Bank Nifty को, and PSU banks. I know there will be a lot of questions on that, तो मैं पहले ही clear कर दे रही हूँ. PSU banks are not in favor right now. Sector rotation हुआ करता है पूरे market में, so we'll obviously be with the strength names. तो यहाँ पे ICICI Bank या heavyweight banking counters के साथ रह सकते हो. I'm quickly also tracking the Nifty call option 26,150. इसका थोड़ा और cool off होने का हम wait करेंगे. It's at 75 right now, so we'll wait for this to dip down to 55 to 60 levels. तब हम enter कर सकते हैं for the target of 100 rupees. But we'll wait for it to dip right now. So in the meantime, कुछ ऐसे sectors है जो काफी positive लग रहे हैं, which you can play out. Seasonality wise हम देख रहे हैं festivities coming in. So some of the consumption names are looking very positive. आप ITC को देख सकते हो, जिस तरह से strength build हो रहा है यहाँ पे. All obviously we'll go with the heavyweights because FIIs का जो buying interest है हमारे market में, that is very remarkable right now. तो उनको ध्यान रखते हुए, and जब भी FIIs का buying आता है तो heavyweights में ही focus रहता है. So there'll be a little index shift here. अब मिड कैप में हमने देखा है पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा रैली हुआ है, पर अब वो हेवीवेट्स में भी एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, एंड इट्स टाइम फॉर द हेवीवेट्स टू मूव. फाइनली द एलिफेंट्स आर नाउ डांसिंग, बट नाउ लेट्स कम बैक टू 26,150. ये कूल ऑफ होके 60 तक आया है. नाउ वील जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर for us to enter. I think better will be to enter into 26,100 call because monthly expiry है, काफी swings भी रहेंगे, and we've just touched lifetime high level as well of 26,175. तो हम दोनों ही strikes को radar पे रखते हैं. Let's just see. Okay, we are clearly making new highs. Okay, so what we can do is 26,150 के कॉल को देखते हैं. It's near 60 right now, right? इसको आप 55 to 60 के buying range में आप buy कर लो, and the target will be 100 for this call. So 26,150 is a buy trade right now, and the target for this is 100 with a stop loss of 50. This is the 0-0 trade for the monthly expiry, and
we are seeing हमारा जो targets है 26,200 का वो अभी achieve ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है. So let's just see how this call moves. We are looking at 26,150 call. I'm just repeating the trade, ma'am. 26,150 call, buy near 55 to 60, stop loss 15.15, and the target is No. Stop loss will be 50, 50. 50, okay. Got it. And the target is 100. 5 point का stop loss है हमारा. So actually 65 के आसपास. Okay, what we'll do is stop loss को आप actually the call is at 65 and काफी लोगों को 65 पे ही entry मिली होगी. So what we can do is 50 will be a good risk reward over here. 15 point के stop loss आप इधर बिठा सकते हो. Nifty is at again another life high right now. Guys are buying is 60 to 65. Stop loss is 50 and the target is 100. So of course monthly expiry है तो premium swings बहुत रहेंगे, jumps भी हो रहे हैं. And in fact पूरे दिन में ही हमने देखा है कि there has been quite a lot of jumps throughout the day. So we'll be quick in booking the profits as well. अभी तो फिलहाल 72, 73 के आसपास है वो call. Okay, the call is at 77 now. 80. 80 is what we are seeing. Nifty is at 26,188, another lifetime high. Right. Okay, अभी तो फिलहाल आपको 10 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है. So many people are mentioning कि entry नहीं मिला. That is why we shifted the range. हम सोच रहे थे 55 to 60 के levels पे enter करेंगे, but now we shifted that range 60 to 65 के level. और जब हम बोल भी रहे थे, हमने देखा कि good 2-3 minutes वहाँ index का जो option है वो sustain किया था. So of course people must have got good entry points. Yes, so the call is at 72 now. 74, 75. हम expect करें कि ये 85 and then 100 के targets यहाँ पे आएंगे इस call में. So let's just see. Nifty is also at 26,191. तो बस हम 10 point दूर है अपने target से, immediate target से Nifty के. So let's see how this plans out. Guys, of course monthly expiry है and ऐसे भी ये last के 1 घंटे में आपको quick रहना पड़ता है options में. Okay, so I'm seeing a lot of people are messaging कि yes entry मिल गए. Okay, yes. We are just seeing काफी movement है, काफी swings है. So of course guys I'm repeating it again कि आप quick रहना profits book करने में भी. The call is now at 77 or something. So yes. Okay.
Shigisha is saying 58 to 77 now booking profits. Okay, congratulations, Jigisha. Jay Kumar is saying booked 3000, madam. Thank you very much. Thank you. Okay. जिन्होंने बुक किया है तो भी ठीक है. You can start booking also. So in this case, what you can do is कि आप अपना positioning कर सकते हो. So you can kind of book half your positions and keep the rest half ताकि आप अपना कुछ profits घर भी ले जाओ and you're not taking as much as risk also then. Guys, I hope अभी सबको clear entry मिल गई होगी. It made a low of around 64, I guess. Okay, so the call is at 71 right now. Okay, Nifty is, I'll just quickly make this 5 minutes frame. Guys, the stop loss of the people who are asking is 50, the target is 100. But we can start booking at 85. That is what I'm saying. 85 hoga hamara pehla target, and then 100 will be the second target. Got it. And I think the most important thing of live trading is the fact that we can actually tell you to when to start booking, and जब conviction लग रहा होता है हमें कि call में या option में कहाँ है. Right. Okay. So it's still holding on to 26,150 जो कि index जो कि हमारा एक immediate support भी बन रहा है right now, and we are comfortably trading above our buying price only, but I'm just waiting for some momentum to happen. Usually next जो है हम 1-2 मिनट में movement देख सकते हैं. For the next 1 or 2 minutes, if we don't see the movement, we'll try to exit it. It's near the cost only right now. But हाँ जिन्होंने 75-77 पे भी book किया है तो very nice, congratulations. But we'll just wait for a couple of minutes to see if the movement is still holding on. Right. Okay. Yes, Balwinder ji, sideways हो गया है थोड़ा. Of course, हम लगातार life highs touch कर रहे हैं. आप देखो, this is the 5 minutes frame chart, and from the last half an hour, we are seeing good movements over here. So of course, okay, the call is at 71 right now, और movement थोड़ी बहुत आ रही है. But again fizzle out हो रहा है movement थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं. 193 touch हुआ है life highs. So we're just 7 points away from the targets. But yes, I think movement is fizzling out a little. अभी भी हम cost पे ही है option के. So you can start offloading another 25% of your positions. अभी भी हम cost के ऊपर ही है. Right now the option is trading at 65-67 levels. Okay, it's at 67 right now. Okay, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत वापस movement आ रहा है, but yes, we are now heading to touch a new high. Okay, so it seems that 70 पे आके ये अटक गया है ये call option. It's right now again at 72 right now. So, oh yes, we've touched a new lifetime high, 26,197. The call is at 73.
ओके तो हम देख रहे हैं कि एक नए लाइफ टाइम हाई हमने टच किया है, फिर भी ये कॉल 5 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि 26,200 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हैं। You can see that there are a lot of open interest at 26,200. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत 26,200 का एक लेवल है। We've reached 26,200, but the call is still at 75 levels. तो एक टारगेट्स निफ्टी का हम अचीव किए हैं, बट द कॉल ऑप्शन इज नॉट मूविंग दैट मच। तो क्लियरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में मूवमेंट मुश्किल हो रहा है। सो यू कैन गाइस स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट्स एट 74 राइट नाउ, राइट? तो आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट्स नाउ, बिकॉज लाइफ हाई टच होने के बाद भी अगर ऑप्शन में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट और मुश्किल है। बट नेवरदलेस वी हैव कैप्चर्ड अ 10 पॉइंट मूवमेंट एंड काफी अच्छे कंफर्टेबल लेवल्स पे एंटर भी हुआ है और एग्जिट भी हुआ है। वी गॉट अ री एंट्री चांस आल्सो। मैम पीपल आर आस्किंग अगर वापस 60 टच करता है तो शुड वी री एंटर? सी अभी हमने एक लाइफ टाइम हाई लेवल टच किया, 26,200 वाज अ बिग लेवल एंड एक इम्पोर्टेंट हमारा टारगेट भी था जो अचीव हुआ है। बट फिर भी ऑप्शन जो है वो 5 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर वापस लाइफ हाई अगर क्रॉस भी होता है अभी जो कि 26,200 का है, तभी भी इतना मूवमेंट नहीं एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। सो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू री एंटर ओवर हियर, क्योंकि मोमेंटम जो है वो फिजल आउट हो रहा है। राइट नाउ ऑल्सो द कॉल इज अबव द बाइंग प्राइस। हम अभी 67 68 पे खड़े हैं, बट स्टिल यू सी मूवमेंट इज डिफिकल्ट ओवर हियर। एक पॉइंट पे हम आके देखे कि चिपक गया था 70 पे, वो मूव ही नहीं कर रहा था उसके ऊपर। बट इवन दो वी हैव नॉट रियली मूव्ड अबव 77, तो यहाँ पे time decay is also playing a factor. So now I think you should not re-enter. You should, book all your profits. Right? Okay. क्विकली कुछ स्टॉक आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में तो आज ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट का ही मूवमेंट हमने कैप्चर किया, बट बीटीएससी ट्रेड्स पे हम कुछ फोकस कर सकते हैं अब। सो ऑफ कोर्स टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग कि फेड का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा, तो उसके लिए भी द मार्केट्स आर ईगर एंड अवेटिंग। बट ऑफ कोर्स बैंकिंग विल बी अ लॉट इन फोकस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि नॉन बैंकिंग स्पेस स्टॉक्स भी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स। So one stock which you can look at is Bajaj Finance. I'll just quickly drop the chart as well of Bajaj Finance. Okay, Darshan is writing booked another 5 points. Okay, after re-entry. Oh, congratulations. I booked 900, I booked 3,000, I booked 2,600. कुछ लोगों ने खुद से रिस्क लेके I guess they are churning within that 15 points का range. Okay, so I think I mean index के लिए तो हमने देख लिया. It was sad because monthly expiry के दिन भी हमें 10 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला, which was not really expected. बट हाँ, ये अच्छी बात हुई कि हमें बहुत कंफर्टेबली कॉस्ट के ऊपर एग्जिट करने का मौका मिला। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि 10 पॉइंट अगर कोई नहीं भी राइट कर पाया है, बट दे विल ऑब्वियसली दे मस्ट हैव ऑब्वियसली एग्जिटेड अबव देयर कॉस्ट लेवल्स। तो ये एक अच्छी बात है अनुज आज। Correct. Even अभी भी exit नहीं किया, they can exit not still trading at 70, 71. Yeah. Okay, so quickly I'll just discuss Bajaj Finance because this is one stock which I'm liking right now. So this stock has been, one in focus from the non-banking, financial space stocks. And यहाँ पे हम देख रहे हैं कि whenever Bajaj Finance moves after a consolidation, then the move stays for 4 to 5 sessions.
तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा मूव. Again, I'm just Binoy is writing Miss Nifty Queen, ma'am. I booked 12K profit. Congratulations, Binoy. Okay, so I'll just move to Bajaj Finance again. It's moving after a consolidative range. Volumes भी यहाँ अच्छे add हुए हैं. And now the stock, we are seeing that good amount of rollovers are carrying over in the October series. So ये जो channel breakout होगा, this is going to expect, this is going to be good for the stock. और यहाँ पे हम 8,000 के targets expect कर रहे हैं in Bajaj Finance. So one can look for this stock, Bajaj Finance, for 8,000 targets. For the people Okay, who are holding it, so first target is achieved. yeah, the call is at 85 after a long consolidation, and the Nifty is at 26 to 11 right now, above 200. Thanks a lot, ma'am. Appreciate your efforts. Thanks a lot, both of you. Thank you. Trusted you. Thank you so much. Komal ji, it's better, to book less profit rather than losing some money. I guess काफी लोग sad हैं कि उन्होंने जल्दी exit कर लिया. But I hope you remember the expiry with Piyush sir, क्योंकि हमने last moment पे stop loss change किया and then the stop loss was hit, right? So I guess this is better situation. Okay, someone's writing booked 3,000, churning for 5-6 points. Okay, I mean, if you are an expert trader, of course, you can keep churning also. But हाँ, right guidance आपको right strike के साथ मिल जाए तो I think there's nothing like that. So I'll just quickly reiterate Bajaj Finance ka targets. 8,000 is what we're expecting, and 76.30 is the support or the stop loss which will act. So guys, you can see this trade for another up move. I'll just quickly show you how Nifty has moved. And जैसा कि मयूर जी कह रहे हैं, काफी सारे scalpers हैं हमारी community में. That's really great to see. आज सबने कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स 5-10-15 पॉइंट बुक किए होंगे. जिन्होंने एंड तक होल्ड किया उनके लिए टारगेट अचीव्ड है. फॉर द पीपल हु took their own risk. Yes, guys, momentum थोड़ा fizzle out हो रहा था last में. So I think that is the reason why I told you कि you can start booking, because of course हमें option trading के साथ risk management भी करना है, बहुत important होता है. Okay, किसी ने दो स्ट्राइक किया है. कार्तिक इज राइटिंग 26,100 और 26,150 दोनों ही किए. Thank you. So thank you, Karthik. And also guys, it is important to be very active during these sessions, क्योंकि हमने within a fraction of 1 minute or around 1 minute and a half हमने हमारा बाइंग रेंज शिफ्ट किया था फ्रॉम 50-55 टू वी शिफ्टेड टू 60-65. तभी हमको एंट्री भी मिल पाई थी. सो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द सेशंस, क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स स्ट्राइक भी चेंज हो जाती है, बाइंग प्राइस टारगेट सब चेंज हो जाता है. Indrajit is writing 87K profit. Thank you. Manish is okay. Manish is writing on WhatsApp group, so I'll just take a couple of seconds to say that I do not have any WhatsApp groups, guys. So please, आप कुछ fake वगैरह जो भी accounts चल रहे हैं उनको मत join करना. We Motilal Oswal group will never ask you for money on WhatsApp, and trust me, guys. WhatsApp group मेरा कोई नहीं है. So you can, please do not join or please do not fall for any of the claims. Okay, Mayur is asking what is the reason for such a weird move. So Mayur, it's not weird. सुबह से हम देख रहे हैं कि there has been a good buying range in the Nifty. और सुबह का एक 3 घंटे का अच्छा मूव, उसके बाद 2 घंटे कंसोलिडेट किए हम वापस. In the last couple of hours we've again moved. So this is a typical pattern where it is clearly showing that bulls are very comfortable. और कंसोलिडेशन हुआ, इसके वजह से हमें इस लास्ट के 1 घंटे में थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो मिला है. एंड इट्स अ मंथली एक्सपायरी, तो ऑफ कोर्स ये जो मूवमेंट्स है वो ऐसे ही रहेंगे. एंड इट्स ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी के दिन वाइल्ड भी रहते हैं, काफी ऑप्शन स्विंग्स रहते हैं. सो सब आपको कंसिडर करना है. ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट ओनली आई सेड कि आज स्विंग्स रहेंगे, मंथली एक्सपायरी है. बीच में हम थोड़ा बहुत अटक गए थे विद द ट्रेड, 70 पे अब चिपक गया था, बट नाउ इट्स एट 80-85 लेवल.
So, of course, we'll have to be very dynamic in option trading and in the last hour specifically. So, 26 to 33 is the life high that we've touched. क्या पता next 15-20 मिनट में हम एक और life high touch कर ले. But yes, congratulations to all of you who've made good profit. I can see a lot of people who have said कि आपने range बता दिया तो हम उसमें churning भी कर लिए. So yes, congratulations and thank you. Thank you, everyone, and great. It's great to see people churning and booking profits. I know some people are feeling sad कि सिर्फ 10-15 point हम capture कर पाए, but there's nothing to be sad. You should be happy कि loss नहीं हुआ. We have booked profits at the end. And thanks a lot, Shivangi ma'am, and I guess we are happy to see our streak is still continuing forward. We hope कि हमारी streak टूटे ना. We have already shared the BTST. You can check the pin section in the comment. वहाँ पे आपको BTST मिल जाएगा. And I know आज हमने एक भी stock queries नहीं ली है. So please join it tomorrow morning at 9:30 a.m. Same place, same host and same expert. Yes, कल शिवांगी मैम का morning में we have our live session. So please feel free to join that. And tomorrow we have our monthly Sensex expiry. So do join in to trade with the Sensex King. And I hope you remember our last Sensex trade जहाँ पे सीधा it went from 125 to 500. We hope कि कल भी ऐसा ही हो and we should be able to capture that. Thank you everyone. Thank you Shivangi ma'am. See you tomorrow.